Okay, so good evening everyone. First class. So we'll continue 3rd August to actually 10th August जाए भी जिनसे अच्छी so तमते नुआ कि से डेट माने से डेट है ना काली रो भी न्यूज़ अच्छी आज रो भी किचरा न्यूज़ अच्छी अच्छा so कौन न्यूज़ तमन का पाखर अच्छी 101 रामसर साइट ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश रो फर्स्ट आओ कोलंबिया आओ ओके ओके ठीक है आओ गुड इवनिंग पंकज आओ गोवर्धन स्कीम किछि कौन सेटा एग्जैक्टली tagline je what is that scheme to produce compressed biogas from waste like municipality wastes and organic waste, agricultural residues and gobar waste, cow dung. From that we can make compressed biogas and we can make it with CNG. yes With automobile. right good ଆଉ କିଛି ଏତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ठीक ଅଛି good at least we are updated so first news is earthquake in Colombia okay so earthquake विषय हम already पढ़िछु तम माने ज्योग्राफी रे भी पढ़िबो तो सेत में एते डीप नो बट यस कोलंबिया रे हेइतला केते मैग्नीट्यूड रो 7 पॉइंट केते मैग्नीट्यूड रो हेइतला तो कोलंबिया रो लोकेशन इंपोर्टेंट हे जाउची कोठी देखु जो तमे एटा कोन एटा को पोर्शन टा साउथ अमेरिका ना साउथ अमेरिका राइट साउथ अमेरिका रो एटा हला पार्ट बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया आखो पाखरे कोन सब अछि वेनेजुएला अछि जोटा कि सब बळे प्रायतः माने एवरी रिसेंटली न्यूज रे रही आछि आउ ए सब हम देखिथिलु गुआना इक्वेडर तापरे पेरू रो भी बॉर्डर लागि छि एंड ब्राजील सब इंपोर्टेंट ब्राजील okay this canal is known as Panama Canal hello okay so powerful 7.4 magnitude earthquake struck western Colombia yesterday killing at least 132 people injured over 570 that अधिका भी injured होइछन्ती The earthquake is the strongest recorded in Colombia in the last decade. Last 10 वर्ष रे सबुठु strongest earthquake आमे कोलंबिया रे एटा देखिया को पाउछु. ओके अच्छा एपिसेंटर कोन फोकस कोन पढिलु फोकस काहा को कहबा इनसाइड जोठी एक्जेक्टली जनरेट हला सेटा फोकस सेठु आसिले तमरो अर्थ सरफेस ऊपरे सेटा हला एपिसेंटर तो एपिसेंटर आरो कोठी Colombia रे हला epicenter is located near the municipality of San Jose del Palmar okay exactly तारो epicenter टे सेठी depth जदि हमें देखिबा roughly 96 रो 107 किलोमीटर deep पर्यंत तमे एटा देखि पारछ that means focus मु कहि परिबी focus is around 66 miles deep or 107 kilometer deep generate हेछि impact area felt across 9 departments and all 32 provincial capitals. It shook neighboring countries Venezuela, Ecuador, Panama. हैला तो कोलंबिया रे हेकी भी तार नेबरिंग कंट्रीज जोडा गामे में देखिलु हैला सबुठी तार इफेक्ट देखिया को पाइथिलु ओके अच्छा why it is important it is highly significant
from a geographical and geological standpoint because it released immense energy. आम कहलु लास्ट 10 वर्ष रे सबुठु अधिका पावरफुल अर्थक्वेक इट हेची. Why? Because it released immense energy from deep beneath the Andes mountain. So where is this Andes mountain? आम लास्ट को अर्थक्वेक विषय करथिलु बदे Andes mountain मु तुमको देखैथिली पूरा पिंक कलर रो कोडी हेतिला लास्ट वेनेजुएला. हाँ तो पूरा एंडिस माउंटेन रेंज थिला तो ता माने बीनीथ दोज एंडिस माउंटेन रो तमरो ये अर्थक्वेक ता ओरिजिनेट हेची. ओके creating an expansive shock wave that bypassed the local crust defenses to shatter the populated mountain valleys. Okay, geologists are classifying this event as the most powerful earthquake last decade रे से जिनस टा कुआ गला. तो मैग्नीट्यूड आमे देखिलु 7.4 मैग्नीट्यूड. टाइम छाडो एपिसेंटर कोठी तमर थिला, डेप्थ केते थिला हैला, कोठी कोठी इंपैक्ट तार देखा गला. ओके सो हियर यू कैन सी दिस इज द सैंड जोस जोठी एक्जेक्टली हेतिला. दिस इज द पैसिफिक ओशियन. को प्लेट्स इन्वॉल्वड अछंती एथिरे. प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स रो मूवमेंट जो हुई अर्थक्वेक हुए. सो व्हिच प्लेट्स आर इन्वॉल्वड? तीनटा प्लेट इन्वॉल्वड अछंती एथिरे. ट्रिपल प्लेट क्लैश हेजी. नाज़का प्लेट, ओके, कैरिबियन प्लेट एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट. तीनटा प्लेट रो मूवमेंट जोगु तमरो अर्थक्वेक देखिया को मिले छी. So the quake ruptured approximately 5 km east of the epicenter area सेटा जरा थिला. Geographically this sits at an elevation of roughly 13,000 feet within the Cordillera Occidental माने western ranges तांकर सेट हुएती geographically. तो मेन हला you have to remember को plates involved हला. नाज़का प्लेट और मैंने कहि परिबो ओशियनिक क्रस्ट मूविंग ईस्ट टू द पैसिफिक. पैसिफिक ओशियन पाखापाखि हला तो ईस्ट टू पैसिफिक आड़ को मूवमेंट हला. कैरिबियन प्लेट तमरो मूव्ड टुवर्ड द नॉर्थ और द ईस्ट एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट कोडी ऑब्वियसली इट्स माने से वेस्ट आड़ को तेरे मूवमेंट हला. ए तीनटा प्लेट जोगु तमरो अर्थक्वेक सेठी देखिया को पाइला हला. सो Colombia sits squarely on the Pacific Ring of Fire. से क्लास रे में हमें देखिथिलु Pacific Ring of Fire पाखापाखि ही एटा अछि and features one of the most complex tectonic jigsaw puzzles. माने obviously बहुत सारा सेठी tectonic plates involved अछंती तो highly chances अछि कि earthquake हबा हैला भी. Okay, the country is jammed between 3 massive tectonic plates. These are the tectonic plates. Okay. So see strike slip motion आमर सेठी भी हितला. लास्ट जो अर्थक्वेक आमे पढलु वेनेजुएला रे सेठी भी हितला. एठी भी से जिंस हला मीनिंग द मैसिव प्लेट्स ग्राउंड हॉरिजॉन्टली साइडवेज. हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हेजी पास्ट वन अनदर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर. तो ईस्ट वेस्ट मूवमेंट आमे देखिलु तीनटा प्लेट रो. तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जगु तमरो अर्थक्वेक एटी देखिया को मिल जाय. हियर इज द फिगर. तो एटा हला तमरो कोन कैरिबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड कॉकोस प्लेट एंड एटी तमरो रहउची नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड बिकॉज़ मेनली एठी हमरो कैरिबियन प्लेट ता रहउची हला. तो एटा तमे मन रखिबो मोस्ट प्रोबेबली. ओके अच्छा ए आर्टिकल ता देखितला. This is regarding vulture, Indian vulture. Okay, vulture मानकर significance कौन? Why are they important for the ecosystem? Yes, they are like natural. It helps in decomposition, act like a decomposer. So it cleans the environment by eating the dead animals. जे भी तमे जोटी तमरो स्मशान गुडा थाए सेठी बहुत वल्चर्स देखा को पाओ बिकॉज दे तांकर मेन खाद्य हला डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑफ एनी एनिमल्स. तो रिसेंटली तो नो बहुत पुराना गोटे न्यूज हेतिला कोन से माने कोन गोटे खाई देथिले एंड तापर वल्चर मानकर पॉपुलेशन पूरा हमरो कमी जाइथिला. कोन को ड्रग
डाइक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक आम जनरली आम पेन किलर्स रे थाए तो ह्यूमन्स बीइंग कंज्यूम बहुत करती तो से जिनसटा जिते ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी को से खाती ये जिनसटा से पड़ो डाइक्लोफेनाक हाँ एनिमल्स आमे भी खाऊ इनडायरेक्ट एबे भी तमर मेडिसिन रे तमे देखिबो बंद हो जाइए स्टिल सम परसेंट इज देयर डाइक्लोफेनाक आम एत क्षतिकारक न हेले भी वल्चर्स मान सबुठ क्षतिकारक है डाइक्लोफेनाक तो सही डाइक्लोफेनाक खाइबा जोगु तांकर पूरा स्पीसीज माने एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट बाय द वे को कैटेगरी रे माने अछंदे वर्तमान critically endangered एटा मन रखियो आमे vultures or Indian vulture they are under the critically endangered हैला तो पूरा पूरा माने विलुप्त हो जाइतले कहले चले एते तांगर पॉपुलेशन कमी जाइतला दिस वाज द मेन रीजन फॉर इट तो एबे रिसेंटली तमे आसाम रो भी टिके किछि दिन पूर्व आसाम रो गोटे न्यूज़ आस्थिले से माने भी किछिटा रिलीज करछंती आ ए न्यूज़ टा हला ए 6 month old Indian vulture जो फिगर देखुछो तारो साइंटिफिक नेम हला Gyps indicus okay Indian vulture scientific name being released at the Sri Ramadevara Betta vulture sanctuary which is in Ramanagara Karnataka. The vulture had been rescued and treated by the people for animals wildlife hospital in coordination with the forest department तो ताको treat करेगी ताको release कर दिया जाइती सेति पे एटा न्यूज़ रे थिला तो आमे टिके Indian vulture विषय पढ़िया राइट it is also called long-billed vulture it is a bird of prey native to Asia रे ही most probably हम एटा देखिए को पाऊ scientific name I told you Gyps indicus it is a part of group called old world vultures they belong to the Accipitridae family okay किसी family किसी genus को से माने belong करते हुए ईगल्स हॉक्स ए माने सब ए पर्टिकुलर फैमिली को ही बिलोंग करंती ओके दीज आर नेटिव टू इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल दे आर यूजुअली फाउंड इन savannas and other open habitats around villages cities and near cultivated areas okay it has suffered a 97 to 99% population decrease due to poisoning caused by the veterinary drug डाइक्लोफेनाक जोगु तांगर पाखा पाखी देखो 99 population decrease हो जाइथिला it was given to working animals as it reduced joint pain and so kept them working for longer डाइक्लोफेनाक ता कोन पे दिया जाय vultures got poisoned when they ate the meat of the dead cattle that had been treated with डाइक्लोफेनाक ओके तो इथि पे किडनी फेलियर तमरो देखा जाइथिला vultures मानकर ओके अच्छा एज आई सेड कंजर्वेशन स्टेटस जो हमें देखिबा IUCN रेड लिस्ट दे आर अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओके सो इंडिया रे 9 स्पीसीज हमें देखिया को पाओ vultures रो ओके 9 species of vultures they are found in India 6 species are resident हैला white rumped vulture Indian vulture slender billed vulture अच्छा स्लेंडर बिल्ड वल्चर टा तमरा आसाम रे रिलीज करा हेथिला रिसेंटली एटा जो हमें देखिलो दिस इज इंडियन वल्चर अलग अलग स्पीसीज सब ओके रेड हेडेड वल्चर बियर्डेड वल्चर इजिप्शियन वल्चर ए माने रेसिडेंट स्पीसीज माने मोस्टली हमरो एठी रेसिडेंट से माने में पाइबा 3 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बाहरु आसंती कुकु सिनेरियस वल्चर ग्रिफॉन वल्चर एंड हिमालयन वल्चर तो तीनटा हमरो सॉरी 6टा हमरो रेसिडेंट तीनटा बाहरु आसंती हैला समस्तंकर जदि आमे कोन IUCN देखिबा क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR जोटा देखुछु दैट इज बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड सो व्हाइट रम्प्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लस अपेंडिक्स 2 साइट्स रो अपेंडिक्स 2 WPA रो शेड्यूल 1 रे ए माने बिलोंग करंती okay red headed vulture again critically endangered entity kono IUCN near threatened okay EN is endangered हैला तो Egyptian vulture scavenger vulture और pharaoh's chicken भी ताको कहा जाए so that is endangered
आ जदि आमे बेडेड वल्चर कथा कहबा दैट इज नियर थ्रेटेंड हैला। तो वल्चर भी स्पीसीज अछि तो आईयूसीएन समस्त गोटे भाबी दबनी जो गुडा को फर्स्ट आमे देखिलु हैला व्हाइट रम्ड इंडियन वल्चर आउ स्लेंडर बिल एतिकी जे क्रिटिकली एंडेंजर तापर जो गुडा को आमे देखुछु मोस्टली क्रिटिकली एटा भी क्रिटिकली एंडेंजर बाय द वे एटा तमरा दीटा टिके अलगा अछि ओके कोटा कोठी तम मोस्टली देखिया को पाउछु से जिंसटा एठी लिखा अछि। अच्छा देन माइग्रेटरी जदि हमें देखिबा ब्लैक वल्चर मॉन्क वल्चर और सिनेरियस वल्चर नियर थ्रेटेंड से माने भी एटा एलसी कोन लीस्ट कंसर्न दैट इज यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर ए तीनटा हमर माइग्रेटरी बाहर आसंती हमर इंडियन स्पीसीज नोंत माने इंडिया रो रेसिडेंट स्पीसीज नोंत हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर नियर थ्रेटेंड हैला। Only to show you the IUCN is different, I have included this 9 species. Okay, so ecosystem रे तंगर एटा देखा होछु तो ना झापसे देखा होछि। Okay, so vultures are vital for ecosystem health, efficiently disposing of dead animals and organic wastes. जेहेतु dead animals को से माने खांती तो सेटा हमर गोटे ecosystem को बैलेंस करिवो। Disease control, they help reduce disease spread among wildlife, livestock and humans by consuming carcasses. माने जहाँ भी जिंस थिबा से माने निजे कंज्यूम कर दियंते तो से जिंसटा स्प्रेड हेलानी हैला। Nutrient cycling, as obligate scavengers, each vulture species contributes uniquely to nutrient cycling. Absence consequences, without vulture decomposition रो time ता लंबा हे जिवो। Raising disease transmission risk रहिबो such as anthrax, botulism and rabies ए सब डिजीज गुडा को देखिबो हम पाई परिबो जदी से माने न रहंती तो। Impact on health, their absence adversely affects the wildlife and the human health. तो से माने भी दरकार इकोसिस्टम को बैलेंस करे पे से मानकर पॉपुलेशन में हमको दरकार ओके। एटा तमे पढ़ देबो ऑलरेडी हमें देखिछु को एरिया रे से माने मोस्टली दे आर फाउंड इन सवानास विलेजेस सिटी एंड कल्टिवेटेड एरियाज कहली। जियोग्राफिकल रेंज इंडिया नेपाल पाकिस्तान रे माने मोस्टली देखिया को पांत। पॉपुलेशन इन कियालोदियो नेशनल पार्क ड्रॉप्ड फ्रॉम 816 to 25 birds in between 1985 to 1999. So you see 90% 99% decrease मुझे कहतली 800 प्लस birds थिले ड्रास्टिकली 26 बर्ड्स रो पॉपुलेशन तांगर कमी जाइथिला हला। तो करंट स्टेटस जदि हमें देखिबा राम ए जो हिल हमें बे देखिलु फिगर रे राम कोन सेटा रामनगरम हिल्स व्हिच इज इन कर्नाटका एंड नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन तमिलनाडु एठी किछि किछि तांगर पॉपुलेशन वर्तमान हमें देखिया को पाउछु ओके। तांकर मेजर थ्रेट हला डाइक्लोफेनाक ओके जो थे तांगर किडनी फेलियर हबारो चांसेस थाए यदि कंजर्वेशन स्टेटस देखिलो ऑलरेडी समस्तंगर। नेक्स्ट ई समुद्र प्लेटफॉर्म, एनी आइडिया ऑन दिस? ई समुद्र प्लेटफॉर्म लास्ट क्लास भी हमें ऑफशोर विषय रे समुद्र विषय किछटा जिंस पढ़थिलु कोन थिला सब ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम गोटे थिला कोन थिला ता नाटा कोन थिला समुद्र मंथन आउडे कौन सा ना कौन था समुद्र यान तो तुम पढ़ी छ कौन थिला जदि तुम लास्ट क्लास रो जिंस गोटे सप्ताह भूली जाउ छ मु केमिति एक्सपेक्ट करबी तुम वर्ष पर ए सब क्लास रो जिंस मन रखिबो ऑप्शन रे असली कंफ्यूज हो बोलता मतलब जहां पढु छ टिके एटलीस्ट क्लास पूर्व हाँ ये गुड़ा को आम लास्ट क्लास देखी गोटे रिविजन ओवरलुक करदेव है। चलो तो ई समुद्र प्लेटफॉर्म कौन देखिया यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दे लॉन्च दिस ई समुद्र प्लेटफॉर्म एन इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल ई लिखाई माने ऑब्वियसली डिजिटल पोर्टल एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांसमिशन
or transformation of Indian maritime administration. तो गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हबो जो थरे कि ऑब्वियसली सब कंबाइन हेगी गोटे प्लेटफॉर्म रे हमें पाई परिबा बहुत सारा जिंस. सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल विंडो digital first and faceless portal designated to digitize and streamline administrative workflows. आम ए समुद्र विषय बहुत तुम रिसेंटली भी देखु न्यूज रे बारंबार जिनसा आसूची भी समुद्रयान पढ़लु ये जो कौन से भूली जाऊँ समुद्र मंथन पढ़लु यहाँ पढ़ु जहाँ भी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग फ्रिलिंग ये सब को टे फोकस करा तो जिते फोकस बढ़ो तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी बढ़ो वर्कलोड बढ़ो से गोटे प्लाटफर्म दरकार हम आगुरी ये गुड़ा जिन नाला एवं नुआ नुआ हो तो ये प्लाटफर्म गोटे निहाती दरकार था जो कि तुम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ्लो डिजिटल भाव में सब चलो. It integrates services for seafarers, shipping companies, recruitment agencies सिथरे रहिबे, training institute भी सिथरे हमें पाइबा, and port authorities under a unified digital framework. Okay, which ministry is involved? Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Implementing agency is platform ro DGMA, Directorate General of Maritime Administration. Okay. What is the strategic context? So aligned with the goals of Maritime India Vision 2030. Okay, जो कोनो से भी maritime related किसी answer मैंने question वगैरह आसुची you have to mention about this goal. आमर किसी उड़े goal अच्छी नहीं आती by next 5 years आमर उड़े vision अच्छी जंते विकसित भारत रो उड़े vision अच्छी मैरीटाइम इंडिया गोटे विजन अच्छे बाय 2030 हमको किसी जिनस अचीव कर तो ताकू ऑब्वियसली ता गोल सहित को अलाइन करके बना है. एंड मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047. सो बोथ आर डिफरेंट. दिस इज रिलेटेड टू विकसित भारत, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत, निजे बनैबा है जमती आम ग्रीन हाइड्रोजन कथा देखिलु गोटे जिनस तुम बनैल माने देन तार मैन्युफैक्चरिंग ये सब आम स्टार्ट करवा लोक माने इंटरेस्ट आनिबे से जिनसटा को बनाया पे राइट. तो एबे जदी मैरीटाइम ऊपर फोकस होची माने आ पे जहा सा जिनस सब दरकार तार मैन्युफैक्चर बढ़िबो, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कमिबो, से जिनस गुडा को लिखिबो कोन. ओके, एम टू ट्रांजिशन मैरीटाइम गवर्नेंस फ्रॉम ए पेपर बेस्ड ऑफिस मॉडल टू ए ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल डिजिटल इकोसिस्टम. जहा पेपर वेपर काम चलथिला ताकू बंद करके एबे डिजिटली सब जिनस गुडा को हबो. Enhancing ease of living for Indian seafarers and ease of doing business for maritime businessmen. Okay, तो कहा को एटा फायदा हबो जो माने एडमिनिस्ट्रेशन रे अछंती मैरीटाइम रे से माने को ए गुडा को फायदा हबो. डिजिटली सब डाटा पाई परबा कोन. सो सिंगल विंडो डिजिटल गवर्नेंस consolidates administrative workflow, online fee payment, real time application tracking, digital certificate सब पेपरलेस हे जिवो. Digital Seafarers Employment Agreement introduces verifiable digital employment agreements to safeguard contractual entitlements, transparent wages. सब ट्रांसपेरेंट भाव में रही जहाँ क्या केते पैसा मिलेबो कहार केते दरमा रहइबो एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट. ओके, लेबर मान को केते मिलिया दरकार, क्रू मेंबर मान को केते सब मिलिया दरकार, सब तमे से डिजिटल प्लेटफॉर्म रे पाई परिबो. तमे पाई परिबोनी those who are involved with that portal से माने पाई. Real time seafarer tracking integrates with tracking tools भी रहिबो to monitor the deployment, safety, location and welfare of Indian seafarers. So national security सहित भी आमे आकु लिंक करि परिबा. मैरीटाइम थ्रेट भी हमर रहउची राइट, मैराइन थ्रेट गुडा को रहउची तो से मान को ये पे गोटे हमको डिजिटली डाटा वाटा सब रहिला ट्रैकिंग भी करि परलो तो हमर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टा भी टिके टिके आमे कमे परिबा. 24/7 इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल जहार भी किछि माने से मान को प्रॉब्लम थेबो ई नाविक प्लेटफॉर्म माने से प्लेटफॉर्म भितर गोटे ई नाविक प्लेटफॉर्म कराइछि जो थरे कि खाली तमरो ग्रीवेंस गुडा को सेठी सुनिबे. सो इट कनेक्ट्स सीफेयरर्स डायरेक्टली विथ इमरजेंसी रेस्पॉन्स. किछि भी कोठी गोटे शिप रहि गला किछि भी असुविधा हला देन दे डायरेक्टली ए ऑनलाइन पोर्टल थ्रू रु से माने ये करि परिबे. मेडिकल हेल्प नहीं परिबे जहां भी ग्रीवेंस थेबो सेतरे ये हबो. Remote maritime access built as a digital first and faceless platform allowing active seafarers deployed on high seas vessel to access official services smoothly.
शिप रे तो माने देखो पेपर ऊपर जदि तुम डिपेंड रहइबा देन बहुत असुविधा हो केतबेले को पेपर कहा पाके पहुंचबो किछि ठिकाना नै डिजिटल हे गले जिंस गुडा को स्मूथली चलिबो फोकस ऑन इंक्लूजन एंड मेंटल हेल्थ complements welfare programs like सागर में सम्मान for women seafarers so women माने भी अच्छे बहुत जन शिपिंग रे एंड ऑल तो सेम तांको पय भी गोटे प्रोग्राम बहुत आगु चली आसी सागर में सम्मान सेमान कर सेफ्टी सेमान कर रेस्पेक्ट रिगार्डिंग तो तांको पय भी एटा बेनिफिशियल हबो एंड सागर में योग promoting mental and physical well-being okay ए जिंस रे भी हेल्प करियो so provides scalable digital infrastructure for India's expanding seafarer workforce which is now over 3.23 lakh strong reduces compliance delay जहाँ भी किसी असुविधा थी तारो delay obviously कमी जीवो administrative cost भी कमी जीवो निहाती पेपर सब कमी गले for shipping companies and RPSL कोना जाननी and maritime training institutes okay so कौन थिला एटा ये platform ई समुद्र platform just as an example you can write जेता वाला digital infrastructure कथा भी पढ़िला then आकु भी तमे गोटे सेठी example लिखि परबो digital india कथा हमें को जो digital किछि भी digital पढ़ला कि हमें maritime रे भी digital हे गलोनी ई जिंस भी लिखि परबो अच्छा एससी जजेस बिल मुझे मनी बिल रो कहीं की लिखी छी एससी जजेस बिल तुमरा पास हैला कोन हैला सेतरे सीट्स बढ़िला ना ओके सो मुझे मनी बिल रो कहीं की इमेज टा रखी छी व्हाई to make any bill as a money bill, to certify it as a money bill. So if he is doing that, then in Rajya Sabha it has no power or right to ask question about the bill. So that's why it has like money bill. so basically किछि क्वेश्चन उठिबानी सीधा सीधा पास हे जिवो सेति में मनी बिल रे ताकू थोइ देले but is it legal no then how it is passed it is passed but कौन माने केमे थेला हबा कथा न but कौन पे एंड करा गला आगुरु भी कराई छै एमदिन के एटा फर्स्ट टाइम कराई छै आगुरु भी कराई छै एंड मोस्ट सेति पय ही तमरो कंट्रोवर्सी सबुतरे आरो रिलेट हे की थाए तो सुप्रीम कोर्ट रो जो जजेस मानकर कोन नंबर्स ता इंक्रीज करा गला इंक्रीज करिवा पय बिल पास हैला बिल पास करिया पे ताको उठे मनी बिल रे रखि देले तो मनी बिल रे स्पीकर जहा कहला सेटा फाइनल थाए लोक मानकर किछि सेतरे इन्वॉल्वमेंट नथे माने जो माने भी थिबे सेठी लोकसभा रे माने ये रे से माने किछि इन्वॉल्व नथे तांकर ऑब्जेक्शन किछि मैटर करे ही नहीं बिकॉज़ इट इज अंडर मनी बिल बेसिकली हमर आर्टिकल 110 रे मनी बिल विषय अछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल 108 आर्टिकल टा कोन financial bill so what is the difference between financial bill and money bill both deals with finance but what is the major difference between financial bill and money bill are all financial bills money bills are all money bills financial bills All money bills are not financial bills. okay so this is your homework for today money bill financial bill को डिटेल रे पढिबो कौन डिफरेंस गोटे 4-5टा पॉइंट रो डिफरेंस तमे निजे जेमते बाहर कर परिबो हला एंड ए जो स्टेटमेंट मु कहली आर ऑल मनी बिल्स अंडर फाइनेंशियल बिल आर ऑल फाइनेंशियल बिल एटा पूरा क्लियर है कि ऐसे थी ओके दैट इज योर होमवर्क चलो so the Rajya Sabha passed the Supreme Court amendment bill raising the sanctioned strength of SC judges from 34 to 38 तो आगुरु SC judges करो 34 थिला एबे 38 हला including the Chief Justice of India it had cleared the Lok Sabha earlier the bill was passed as a money bill okay the same route used in 2019
लास्ट माने 2019 रे भी जब हेतिला सेही मनी बिल थ्रू रे ही एटा पास हेतिला. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जेतबेले तमरो स्ट्रेंथ 34 हेतिला मनी बिल थ्रू ही पास हेतिला. A 2018 dissenting SC opinion had called this route a fraud on the constitution. Okay, why a money bill? It cites the expenditure of creating 4 new judge post. Okay, ସେଥିରେ ତମର expenditure କଥା ପଡ଼ିଛି କି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହବ ଆଉ ଯେହେତୁ expenditure କଥାଟା ପଡ଼ିଗଲା money bill under ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ହେଲା. But still it is a fraud on the constitution. Okay, and that is chhado. It cites the expenditure of creating 4 new judge posts, estimating recurring cost of around rupees 10.57 crore per year and non-recurring rupees 3.47 crore per year obviously, and totaling 14 कोटी टंगा तमरो लागुची ए पोस्ट सब बनेबारे सेति पे से माने ताको मनी बिल रे रखिले. Okay, so article 110 defines a money bill as one that in the Lok Sabha speaker opinion deals only with taxation or appropriation from the consolidated contingency fund. तो मनी बिल रे बेसिकली ए जिंस गुडा को इन्वॉल्व टैक्सेशन जिनस गुड़ाक रही किसी तुम कंसोलिडेटेड फंड रिगार्डिंग किंबा कंटिजेंसी फंड रिगार्डिंग किसी भी जिनस है से जिनस तुम मनी बिल रे चेंज कर मनी बिल आने से जिनस गुड़ाक चेंज कर. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली इन द लोकसभा एंड नीड नॉट बी पास्ड बाय द राज्यसभा. मनी बिल जदि है लोकसभा रे पास हो गला माने हो गला. इट नीड नॉट टू बी पास्ड बाय द लोक माने राज्यसभा. ओके, मनी बिल कथा ये पड़े आ जेहेतु एटा भी मनी बिल अंडर कराई तो सेम जिनस लोकसभा रे पास हला सरला ताको दरकार नहीं अप्रूवल फ्रॉम द राज्यसभा. ओके, सो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, कैन नॉट अमेंड, इट ओनली रिकमेंड्स हला. दे आर नॉट इन्वॉल्व बेसिकली इन एनी वे. सो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? आर्टिकल 110 रो क्लॉज 1G covering any matter incidental has been used to pass key laws as money bills bypassing Rajya Sabha where the government lacked numbers. कौन बुझिलो? Government is getting majority from Lok Sabha. Hmm. It is not getting Rajya Sabha. So if it will go through Rajya Sabha, then there is a chance ki number game टाइटे खेलटा है. Okay, the question of whether a bill can be certified as a money bill is pending before a 7 judge constitution. जे कोनोसी भी बिल मनी बिल सर्टिफाई हबो कि नहीं से जिनसटा एपर्यंत पेंडिंग अछि अंडर द 7 judge constitution bench. Okay, the constitutionality of the PMLA, Aadhaar Act and the 2017 Tribunal Amendment all passed as money bills awaits this ruling. माने ए जेति कि तमे एक्ट गुडा को देखुछ आधार एक्ट 2017 ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट PMLA कोनटा मुटे देखिया पड़ियो मन पड़ने मत फुल फॉर्म लिखि देतले छोड़. सो ए जेतिक भी माने प्रीवियसली हेची ए गुडा को भी मनी बिल थ्रू ही पास कराई जे आ वेदर अ बिल कैन बी सर्टिफाइड एज अ मनी बिल ता रिलेटेड किछि फाइनल डिसीजन आसेनी. स्टिल से ना धरि कि माने मनी बिल अंडर रे बहुत सारा बिल्स गुडा को पास होची हेलो, व्हिच शुड नॉट बी द केस. व्हाई? बिकॉज़ दैट इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो एससी जजेस स्ट्रेंथ बढ़िला एटा हमें मन रखिबा via this bill. Article 110 deals with money bill, Article 108 deals with financial bill. It is your duty today to see the difference between these two. Okay, money bill certified by the Lok Sabha speaker only introduced in the Lok Sabha. Rajya Sabha ro approval darkar nahi. PMLA टा कौन देखिया अछि आधार एक्ट ए सब जहाँ भी प्रीवियस अमेंडमेंट थिला माने प्रीवियस एक्ट थिला किछिटा मनी बिल थ्रू रो पास हेथिला बट ता तांको रिव्यू एबे भी पेंडिंग अछि कि सेटा लॉजिकल थिला लॉजिकल माने कोन लीगल थिला कि नहीं. ओके, आर्टिकल 124 कोन
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट राइट तो सेटा भी मनी बेल थ्रू ही पास कराई आर्टिकल 124 कौन पार्लियामेंट को पावर दोची टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय लॉ ओके सो पार्लियामेंट पाखरे पावर अच्छी से तमरी नंबर तो डिसाइड करि परिबो एज पर आर्टिकल 124 ओके तापरे गवर्निंग लॉ सुप्रीम कोर्ट एक्ट ये एक्ट पास हितला तो एटा ही तांगर मेजर एक्ट अंडर जहां भी रूल्स लिखा अछि से हिसाब रे तमरो डिसीजन निया ओके so why is the amendment needed over 92000 cases were pending in the supreme court as of 1st January 2026 so this will go into your data book के एतिकी cases pending as of 1st January एति cases pending अछि सेतवे supreme court रो जज बढ़े माने जज मानकर नंबर टा बढ़ेबा दरकार थिला growing gap between institution and disposal of cases dispose हे परनी obviously increasing litigation has added pressure on the court okay so sanctioned post must be filled promptly एबे पोस्ट सिना बढ़ी गला बट से पोस्ट रे के रहिबो सेटा गोटे चैलेंज ठीक लोक रहिबार अछि delays in the collegium appointment process रबी किछि गोटे झमेला अछि more judges require additional infrastructure and staff judges मन को सैलरी केते सुप्रीम कोर्ट जजेस रा they receive a huge salary हला तो सेति पैसा obviously लागि छि माने खाली चारटा पोस्ट कथा हम कहूछु बट से चारटा पोस्ट हला बळको 14 कोटी टंका लागु छि माने भाबो हला so more judges require additional infrastructure भी तांको दरकार तांको पई स्टाफ भी दरकार सेटा भी गोटे चैलेंज procedural delays and frequent adjournments remain unresolved okay so article 124 देख लो it establishes the supreme court and empowers parliament to fix its strength original strength जदि हमें देखिबा 1950 रे केते थिला जने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले आ मात्र 7टा जजेस थिले originally okay and they are appointed by the president of India under the collegium system what is this collegium system collegium माने group तो कि तांको सिलेक्शन सिस्टम रे अपॉइंटमेंट सिस्टम रे के इन्वॉल्व अछंती के इन्वॉल्व अछंती चीफ जस्टिस नहीं सुप्रीम कोर्ट जज फाइन सुप्रीम कोर्ट जज रे अपॉइंटमेंट रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ सुप्रीम कोर्ट जजेस जे माने प्रीवियसली थिले आउ ओके देखिए सो कॉलेजियम सिस्टम रे एक्चुअली के अच्छंती हु आर इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ माने सिलेक्शन ऑफ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज 65 years ओके 3 जजेस केस फर्स्ट जज केस तमर हेतिला 1981 रे एग्जीक्यूटिव हेड प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम ता कहली देखो तारो भी 3टा केसेस हेतिला 1981 रे एग्जीक्यूटिव पाखरे मेन पावर थिला सिलेक्ट करिया रे सेकंड जजेस केस 1993 रे हेतिला इंट्रोड्यूस दिस कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियरी गेन्ड प्राइमेसी तो एठी जुडिशियरी रो प्राइमेसी एज ही सेड सुप्रीम कोर्ट रो प्रीवियस जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ता माने हमें जुडिशियरी को पावर देलु तो मैं सिलेक्ट करो किए हबो ऑब्वियसली बट ता पूर्वरु executives were involved okay and third judge's case was in 1998 expanded the collegium to the chief justice of India plus 4 senior most supreme court judges okay तो ए collegium system टा expand करा गला केबे third judge's case 1998 ता पूर्वरु इंट्रोड्यूस करा गला एबे माने 1993 रे ता पूर्वरु एग्जीक्यूटिव मन को पाखरे पावर थिला जजेस सिलेक्ट करियार ओके आउ टिके तथापि जाय के कॉलेजियम सिस्टम विषय डिटेल रे पढि ओके सो एटा 2014 रो क्वेश्चन द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन
पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि एज पर आर्टिकल 124 से इम्प्रूव माने ये कर परिबो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट नो डाउट बट नंबर इंक्रीज करिया कथा माने पार्लियामेंट इज इन्वॉल्वड ओके गुड ओके अगेन न्यूज ऑन डिलिमिटेशन बिल आर्टिकल आस्थिला किछि डिटेल मु जिबेनी डिलिमिटेशन बिल ऑलरेडी तमे घिसी पिटी जाइछ तमे जदी देखिनो देन प्रीवियस क्लास गुडा को देखिबो काइंडली okay so which articles are involved भूली गलो article 81, 82. how 117 how 329 ସେଥିପାଇଁ ରିଭିଜନ ଦରକାର ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ହବନି कंटिन्यूअस रिविजन दरकार एते एक्सटेंसिव जदि मु पढेबी भी डिलिमिटेशन बिल एंड यू डू नॉट रिमेंबर देन किछि फायदा नहीं हला ठीक अछि तो जेतु आउथरे न्यूज़ आछि व्हाई बिकॉज़ डीएमके लेस डाउन कंडीशंस टू सपोर्ट द डिलिमिटेशन बिल तो डीएमके कहिला कि हमें सपोर्ट करिवु बट हमर किछिटा कंडीशंस अछि सेटा सैटिस्फाई हेले जाय कि हमें तुमको सपोर्ट करिवु हला सो कोन तांगर कंडीशंस तीनटा कंडीशंस बेसिकली The DMK will support the NDA government delimitation bill only if the following conditions are met. A freeze on the 1971 census as the basis for delimitation for another 25 years. बुझ्छ केते बड़ कथा एटा 1971 सेंसस रो जो डाटा अछि से हिसाब रे तमे आको फ्रीज करो नेक्स्ट 25 वर्ष पर्यंत तमे एबर डाटा हिसाब रे नियोनी सेबर डाटा हिसाब रे नियो नेक्स्ट 25 वर्ष पर्यंत एटा तांगर कंडीशन 1 सेकंड ए ब्लैंकेट माने ब्लैंकेट इंक्रीज 50% इंक्रीज इन लोकसभा सीट्स फॉर ऑल स्टेट्स सब स्टेट्स मन को पई 50% इंक्रीज करो as verbally promised by the Home Minister Amit Shah when the legislative package to bring about delimitation was introduced in the parliament in April. तो अमित शाह में भी एटा कहिथिले वर्बली कहिथिले कि सब स्टेट्स मानकर 50% लोकसभा सीट्स बढ़िबो सेटा तमे फुलफिल करो दिस इज द सेकंड कंडीशन थर्ड इज ए शेड्यूल ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स दैट ईच स्टेट विल हैव इन द लेजिस्लेटिव पैकेज को स्टेट रो केतेटा स्टेट रहे माने सीट रहबो तमे सेटा आगुआ हमकु कहबो एते कि जिंस हेले जाय कि टीएमके विल सपोर्ट द इंडिया गवर्नमेंट फॉर पासिंग दिस बिल ओके तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करे अछि आ डिलिमिटेशन बिल कोन से भीतर को माउ जाउनी आई होप आमे एबे तो क्लियर अछु कोन हेतिला केथर हेतिला सब ओके सो ए तीनटा तमर हला कोन as the Modi government explores a constitutional amendment bill for fresh delimitation DMK signaled conditional support if 3 changes so तीनटा demand हला एटा freeze करा जाओ 1971 census basis रे next 25 years पर्यंत 50% blanket increase सब states रो and को state पाखरे केते seats रहबो सेटा specify करिया को पड़िबो DMK says the government has not approached it formally or informally and will decide only once the bill's final form is known. Okay. So the government renewed the outreach to the opposition. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju spoke with the leader of opposition Rahul Gandhi. Congress reiterated opposition to any constitutional amendment for delimitation. The Constitution Bill, which is this delimitation bill, 131st Amendment Bill, was defeated on April 17. Okay. In the present 540 member Lok Sabha. अच्छा by the way जदि सीट्स बढ़ुची देन सेमानकर वोटिंग भी काउंट होबो जदि आउथरे बिल टा पका जाउची एंड जोटा कि संगर गोटे चैलेंज भी रहिची तो लेट्स सी एंड द गवर्नमेंट स्टिल लैक्स दैट मेजॉरिटी दो द इंडिया ब्लॉक स्ट्रेंथ हैज सिंस चेंज्ड अच्छा चेंज्ड ठीक है ओके
So what is this delimitation? It redraws the boundaries, number of Lok Sabha and assembly seats based on the census population. Current seat freeze is based on the 1971 census, and the freeze is set to lapse after the first census taken after 2026. Constitutional amendment needs a special majority, 2/3 majority darkar. Okay, so that means 360 540 टा मेंबर अछंती, तो एटलीस्ट 360 जन तार सपोर्ट रे ये कले ही बिलटा पास हो, बिलटा एक्ट हो, राइट. ओके, so now that you know delimitation in detail, try to answer this. The orders of the delimitation commission cannot be challenged in a court of law. Is it correct? As per article? How? Is it correct, right? It is correct. Second, when the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the state legislative assembly, they cannot affect any modification in the order. जेतबले डिलिमिटेशन कमिशन जे बसिबो तार ऑर्डर लोक सभा रे प्रेजेंट करा हबो किंबा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन सेथरे आ किछि चेंजेस करि परिबोनी. डिलिमिटेशन कमिशन रो ऑर्डर कथा एठी पड़छि. डिलिमिटेशन कमिशन जहा कहबो that is final, that cannot be modified. So both the statements are correct. Okay. Whatever consider the following statement about delimitation commission. 84th amendment to the constitution in 2001 had put a freeze on the delimitation of Lok Sabha. Delimitation commission appointed by the center has to have 5 members. कौन हबो? कौन हबो आंसर को? देवकी, भक्त महानंद, पंकज राउत को सब. One is correct. Okay. One is correct. Second wrong achi. कोना? किए चार जन ना 3 जन? Okay, so the delimitation commission has to have 5 members, and this is wrong. 84th amendment tamaro freeze karthila, that is correct. Okay, so 1 is correct, answer will be 1 only. Next, try to write this answer. Delimitation padhilo bolse. Explain the constitutional framework governing delimitation in India. Analyze the challenges arising from uneven demographic growth across states. Suggest reforms to ensure equitable and stable representation and future exercises. Detail रे को हमें पढ़िछु कोन करिवा कथा, कोन challenges अछि, कोन measures नहीं परिबो. खाली हमें population देखिया कथा कि इकोनॉमिक कंडीशन भी देखिया कथा गोटे स्टेट रो, से सब जिंस यू हैव टू मेंशन. आर्टिकल सब लिखिबो, एक्ट लिखिबो. ओके, सब लिखिबो. फाइन. डोंट बे क्लास गुडा को जाके देखिबो हैला, धीरे धीरे बुझिबो. अबे फर्स्ट क्लास रे बुझि परिबोनी हैला. चिल.
देखला okay, so this is your Govardhan scheme, 23,371 crore scheme and नाटा देखुछ गोबर्धन ओके अलग जिनस इट्स नॉट गोवर्धन माने जोटा गोवर्धन घी दैट इज आल्सो सिमिलर सेटा भी तमरो काउ सहित ही रिलेटेड सो इट इज आल्सो गोबर बेसिकली व्हिच इज काउ डंग ताठो केमिति हमें धन पाई परिबा पाउछ भी हमें दिस इज ए ओल्ड प्रैक्टिस दैट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर इयर्स हैला किछि नुवा कथा नुवा बट नाउ गोटे स्कीम टा प्रपोज करा जायछि माने पास करा जायछि माने लॉन्च करा जायछि National Circular Bioenergy Scheme, okay, from waste to wealth, as you said, powering a sustainable India. That is the tagline of this scheme. तो 23,733 crore है ना 2035-36 माने नेक्स्ट 10 वर्ष पे तमरो स्कीम टा रखा जायछि एंड एथरे तमरो एक्सपेक्टेड 1.5 लाख जॉब भी हमें जनरेट करि परिबा आ थ्रू रे mainly increase the CBG production. What is CBG? Compressed biogas. माने जहाँ भी waste अच्छी basically livestock waste है गला, crop residue है गला, है ना? ये सब waste गुड़ा को हमें ताकु convert करेगा उटे compressed gas रे. इटा है ला main तारो objective, है ना? जितनी की भी waste है ला ताकु हमें compress करेगा उटे compressed gas रे. That will be the major source of energy that will be using. Okay. So Govardhan is the integrated national framework designed to unify the entire compressed biogas value chain. It converts agriculture residues, cattle dung, press mud, municipal solid waste and other organic biomass into a clean fuel which is CBG compressed biogas को हमें convert करिवो जितने की भी waste तमे एठी देखिलो agriculture residue cow dung press mud municipal solid waste बेथरे रहउची आ जितने की तमर organic biomass रो सब waste बाहरला ताको हमें convert करिवा गोटे clean fuel को okay and high quality organic fertilizer which is fermented organic manure FOM ताको convert करिवा So nodal ministry के involved अच्छी है scheme रे Ministry of Petroleum and Natural Gas 10 वर्ष period पे इटा totally अच्छी है बट start करेगा next 10 वर्ष 2035-36 पर्यंत. So aim is basically to establish CBG as a core pillar of India's green energy mix. तो basically हमें fossil fuel तो use करूचु but थेटा भी import करूचु, है ना? तो then फिर कौन फायदा? हमको आत्मनिर्भर हबार अच्छी माने सब निजे करियार अच्छी फॉसिल फ्यूल माने एमती क्लीन फ्यूल हमको निजे बनैबार अच्छी है ना बाहरु आमे आनिबानी सेति पे ए सब जिंस कराई तो ताकू सीबीजी को कंप्रेस्ड बायोगैस को हमें गोटे कोर पिलर करबा इंडियन ग्रीन एनर्जी मिक्स रो एक्सपांड द डोमेस्टिक रिन्यूएबल गैस प्रोडक्शन हैला अट्रैक्ट लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़िबो ताको अट्रैक्ट करबा बिल्ड ए रूरल सर्कुलर बायो इकोनॉमी एंड रिड्यूस द नेशनल डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल व्हिच इज एलएनजी ओके तो ए कंप्रेस्ड बायोगैस टा बहुत सारा जगह रे भी यूज होची कहबी मु कोठी ओके सो इट एस्टैब्लिशेस मैंडेटरी ब्लेंडिंग टारगेट फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 3% माने एथि की तमे कोन किछि टारगेट्स रही छी नेक्स्ट एई वर्ष रे माने 3% तुमको बढ़ायार अछि तापर 4% एमती धीरे धीरे टारगेट किछि दिया है छी क्रिएटिंग गारंटीड डिमांड इन ट्रांसपोर्ट जोटा सीएनजी रे हमें देखु सीएनजी रो भी डिमांड बढ़ु छी तो सेथरे भी एटा रहइबो एंड डोमेस्टिक यूज रे पीएनजी रे भी एटा पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेथरे भी एटा इन्वॉल्व रहउछि okay introduce a government backed long term administered cbg price of MMBTU टा कोन फुल फॉर्म कोन देखो
ए प्राइस टा तुम फिक्स रहिबो नेक्स्ट 10 वर्ष पर्यंत दिस प्राइस विल बी फिक्स्ड सो व्हाट इज दिस MMBTU केते 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स है तो सेतिकी को माने पर दैट सेतिकी यूनिट एतिकी टंका 2110 एटा फिक्स्ड रहला एज बाय द गवर्नमेंट फॉर द 10-year horizon to provide revenue certainty to plant operator है माने जो माने भी बनेबो तुमको एतिके पैसा तमरो फिक्स्ड रहला तो ऑपरेटर माने भी खुश है जे ए सब इन्वॉल्व अछंती टारगेटेड कैपिटल असिस्टेंस 2 कोटी पर टन पर डे एतिकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा जाउची और करा जिवो 2 कोटी पर टन पर डे of installed CBG capacity for greenfield and brownfield project. What is the difference between greenfield and brownfield project? एटा भी देखिबो दीटा वर्ड लिखा हला greenfield brownfield किछरा डिफरेंस निहाती थिबो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन greenfield and brownfield project तो ता पय तमरो एतिकी कोटी टंका फाइनेंशियल असिस्टेंस रखा हेची extending support to feedstock aggregation and organic manure processing assets okay pipeline भी दरकार हबो जेते बेले हमें compressed gas कथा कहूछु ताको distribution कथा पडला माने pipeline network भी दरकार so supports cluster based and stand alone pipeline connections linking production units directly to the city gas distribution networks and national gas grids है ना pipeline network भी develop होगा dedicated credit guarantee mechanism deploys a institutional credit guarantee scheme to reduce the risk for lenders funding MSMEs cooperatives and rural entrepreneurs entering the CBG sector तो जो माने भी enter करछन समस्त पय किछ ना किछ तमरो एटी माने क्रेडिट गारंटी तो तंकर रहिला सेति पय एते कोटी टंगार इन्वेस्टमेंट भी हेची सो पाइपलाइन हबो जो माने भी इन्वॉल्व छन तंकर भी पैसा पत्र ध्यान दिया जेबो प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माने पावर ऑपरेटर्स मान को पय भी रखाई छी कि एति की तमरो पैसा फिक्स्ड अछि 10 वर्ष जाय तमे चिंता करिया दरकार नै तमे बस बनै की माने बना ओके पर्सनली नहीं हो करे तमे तमरो निजर पर्सनल यूज पे कर परिया बट एटा ह्यूज क्वांटिटी रे जिंस गुडा का दरकार रे ओके सो CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड भी गोटे रही ओके सेट्स अप ए डेडिकेटेड फंड टू असिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल मैपिंग ऑफ बायोमास रिसोर्सेस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर तो ताप पे गोटे अलग फंड भी रही so what is the significance it will boost domestic CBG production reduce LNG import saving foreign exchange and enhancing energy security तो हमें देखो सब जिनस हम एनर्जी सिक्योरिटी कदा ही कहूँ लास्ट किछिटा क्लासेस रे ए जिनस ऊपर ही हमें फोकस करूछु कि नहीं तो क्रिएट्स इनकम फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू जोड़ा गोटे वेस्ट बिली हमें भाबू वेस्ट टू वेल्थ राइट सो गोबर टू धन क्रॉप रेसिड्यू रु हमें केमती इनकम करि परिबा कैटल डंग रु केमती हमें इनकम करि परिबा ओके व्हाइल रिड्यूसिंग द स्टबल बर्निंग तो स्टबल बर्निंग जोगु तमरो स्मोक देखा जाए मोस्टली हैला दिल्ली फिली एरिया से देखथिबो स्मोक में केते खेती होची हैला इवन भुवनेश्वर रे भी हैलानी सो स्टबल बर्निंग जोगु तमरो स्मोक देखा जाए तो सेटा भी रिड्यूस हे परबो जदी हमें ए जिंस गुडा को यूज करू क्लीन फ्यूल जेतो हमें यूज करबा एंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैन्योर ओके ओके बुझला नेक्स्ट रेपो रेट तमरो स्टडी रही छे कोन रेपो रेट कोन पढ़िल नहीं ना पढ़ना व्हाट इज रेपो रेट सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द माने आरबीआई लोन दिए
छोटे छोटे बैंक जहाँ भी हमर नेशनलाइज्ड बैंक्स अछंती से मान को लोन दिए तो सेही रेट टा कांस्टेंट रहिला 5.25%. Okay, so it is the interest rate at which RBI lends to the bank. हैला तो हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी को पैसा जो इंटरेस्ट रेट तमे भी बैंक ठू गोटे आणुछ लोन तार भी किछि गोटे इंटरेस्ट अछि तो ए बैंक माने भी आरबीआई ठू लोन आणंती से मान को भी इंटरेस्ट देबा को पड़े व्हिच इज 5.25%. देखो केते कम इंटरेस्ट रे तमे किंतु जदी बैंक रो किछि लोन आनिबो माने ताठू अधिका माने प्राइवेट बैंक्स रे तो इवन 24% इंटरेस्ट दे कैन चार्ज. ओके सेटा भी रोज मु तो देखुଥିଲି क्रेडिट कार्ड रे 26% इंटरेस्ट बाप रे माने दैट टू गोटे आसे फिक्स्ड डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड माने निज पैसा तमे फिक्स्ड डिपॉजिट करो से माने तुमको क्रेडिट कार्ड देबे सेथिरे तमे देबो 26% माने आमो पैसा आमे यूज करबो सेथिरे आमे तांको इंटरेस्ट देबो 26% बट से माने बैंक आरबीआई रो आनला बेलू को एति कम परसेंट रे आनथबे. ओके सो चेंजेस इन दिस रेट affects loan saving investment and overall economy. तो सेमाने जेहेतु कम इंटरेस्ट आणुचंदी तो हमर भी सेटा इनडायरेक्टली हमर इंटरेस्ट सहित सेटा लिंक होची हला. इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग रेपो रेट चीपर लोन्स मिलिबो बैंक्स बोरो एट लोअर कॉस्ट सो सेमाने लोन भी ऑफर करिबे लोअर इंटरेस्ट रेट रे टू पीपल एंड बिजनेस. इंक्रीजेस स्पेंडिंग लो लोन रेट्स एनकरेज हाउसहोल्ड्स टू बाय होम लोन ए सब लोक नियंती मोस्ट माने सबुठ हाईएस्ट लोन जदि हमको पर्सनल लोन देन होम लोन भी बहुत लोक नियंती इंटरेस्ट कम थाए कार रे भी लोन नियंती अलग किछि भी सामान आजकल कंज्यूमर गुड्स बजाज कार्ड यूज करके लोन सब नियंती. एनकरेजेस बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट and expand operation due to cheaper credit. Support SMEs and agriculture small manufacturing units small businesses farmer they get affordable loans for working capital and production हैला तो indirectly जेहेतु से माने लोन इंटरेस्ट तंगर कम रही छे एमान को indirectly फायदा सब होची. This also improves the liquidity, more money circulates in the economy helping banking operation and credit flow. Okay, अच्छा बहुत सारा जिन सोच. अच्छा reduced money supply can support the value of Indian rupee in the international market. What is this monetary policy committee MPC कौन एटा? It is a ये ही डिसाइड करे जो 5.25% किए डिसाइड करे ए कमिटी. ओके सो दिस कमिटी इज ए 6-member body मन रखिबो of the RBI responsible for formulating India's monetary policy, mainly repo rate, reverse repo rate, and stands to maintain price stability and support growth. Okay, the MPC meet at least 4 times a year. वर्ष को 4 थर से माने मीटिंग करंती to review the economic conditions and recommend policy actions. It plays a key role in balancing inflation control with economic growth. Clear? Okay, so के 6-member committee में कहले के थांती सेथरे गवर्नर ऑफ आरबीआई वर्तमान किए संजय मालहोत्रा को संजय मल्होत्रा. Deputy Governor of RBI in charge of monetary policy. My deputy governor ये थिबो he will be one of the member. माने गवर्नर हो जने chairperson आउ जने RBI official appointed by the central board से भी जने member आउ तीनटा external experts nominated by the government of India, usually economist or finance specialist. They माने they are involved in deciding your repo rate and all. Then finally ग्लो लेक और आपको हमें ग्लो लेक भी कहा जाए. ग्लो लेक कितने सुंदर लेक था, राइट? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश रो प्रथम रामसर साइट. ओके आउ इंडिया रो 101st रामसर साइट. ओके so Union Minister for Environment, Forest and Climate Change
announced the designation of Glaw Lake, also known as Glow Lake, in Arunachal Pradesh as India's 101st Ramsar site. आ पूर्व कोटा थिला 100 नंबर Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary, that was 100th Ramsar site. So this landmark recognition mark Arunachal Pradesh very first Ramsar site, raising India's national tally of internationally protected wetlands past the 100 mark. Okay, so it is a high altitude lake, obviously northeastern regions re jaha bhi thae sab high altitude re, pristine natural freshwater lake, okay, located in the eastern Himalayas, spread across an area of 8 square kilometer at an elevation of approximately 1168 meters above the sea level. Okay, it serves as a major source for the perennial Kamlang river. आ पानी टा सोर्स हिसाब रे यूज हुए, माने इट सर्व्स एज अ सोर्स फॉर कामलांग रिवर, ना कि कामलांग रिवर रो पानी रु ए लेक टा बनी छि. दिस इज टोटली माने माने तार निजर हला. एटा कोठी बाय द वे, एटा दिस इज इन योर लोहित डिस्ट्रिक्ट. तो कंफ्यूज हबनी कि लोहित रिवर रो पानी आसे कि एठी मिसुथबो कि आ पानी जाय कि लोहित रिवर रो मिसुथबो नहीं. ओके, लोहित डिस्ट्रिक्ट रे अछि. ओके, एंड आ पानी जाय कि तमरो पेरेनियल जोटा सब वर्ष माने एनी टाइम इट फ्लोस कामलांग रिवर रे से जाय कि मिसे. ओके, so it is located in Lohit district of Arunachal Pradesh near the town of Wakro. Protected area lies deep inside the Kamlang Tiger Reserve. Okay, Kamlang Tiger Reserve bhitare eta rahichi Glow Lake, and wildlife sanctuary, that is also a wildlife sanctuary, bounded by the Lang River. Okay, that sanctuary is bounded by the Lang River to the north and Namdapha National Park to the south. Namdapha भी न्यूज़ रे थिला कि नहीं पढ़चा थिला उड़ कौन पे उड़. सो एटा तारा साउथ रे रहला, माने ए कामलांग टाइगर रिजर्व रो साउथ रे इट इज नामदफा नेशनल पार्क. तो ए भितरे तमरा रहला ग्लो लेक. क्लियर? It is surrounded by traditional territories inhabited by the Mizu Mishmi, Digaro Mishmi and Idu Mishmi tribal communities. ए ट्राइबल कम्युनिटीज माने भी सेठी तमे देखिया को पाइबो. ओके, हाइड्रोलॉजिकल ओरिजिन, द लेक इज फेड बाय मल्टीपल पेरेनियल हाई एल्टीट्यूड माउंटेन स्ट्रीम्स, नॉट एनी रिवर, दैट इज फेड बाय माउंटेन स्ट्रीम्स. माउंटेन्स रो जो स्ट्रीम्स गुडा को बाहर होची मेजर सोर्स हला तारो सी माउंटेन स्ट्रीम्स, नॉट लोहित रिवर और एनी रिवर. कामलांग रिवर रे जाई कि से माने ये मिस होची, राइट, फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालय glaciated ridges, formed through the natural tectonic activity and land blocked warping typical of the eastern Himalaya structural fold belt, creating a natural high altitude depression. Okay, high altitude depression that impounds alpine runoff. Okay, अच्छा, geological and ecological feature जदि हमें देखिबा, high altitude freshwater basin already हमें देखिलु, covers an expanse of nearly 8 square kilometer, okay, with a circumference of 5 kilometer, okay, and acting as a primary headwater origin for the Kamlang river within the eastern Himalayan biodiversity hotspot. Okay, the surrounding catchment supports a dense microclimate hosting over 150 tree species. Hello, including holong, canarium, rhododendron. Rhododendron तमें बहुत देखिया को पाओ, ये सब मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गुड़ा करे, तो ये सब तमें सीधी भी देखिया को पाओ. पाखापाखी 150 tree species are there in that region and 49 recorded wild orchid species. Critical habitat for 4 big cats. The lake basin is one of the rare Himalayan ecozones supporting all 4 major big cat species: Bengal tiger, Indian leopard, clouded leopard. Clouded leopard भी न्यूज़ रे थिला by the way recently, and snow leopard. ये चारटा species तमें से एरिया रे देखिया को पाइबो.
primate and endemic wildlife refuge, provides a contiguous forest corridor for endangered primates like hulock gibbon, okay, slow loris, capped langur, alongside rare alpine mammals such as mishmi, takin, and red panda. Okay. এটা কইଥିଲି লাস্ট ক্লাস দেখিল PMSSB স্কিম কোন এটা So it is a scholarship scheme for OBC, EBC and DNT students, denotified nomadic tribes. কি মানে DNT মানে সরি কাহাକୁ বুঝিবা denotified notify করা হয়নি they are not notified in any category, semane denotified tribes, to semane ko pai bhi eta rahichi. Concerned ministry of social justice and empowerment, objective to provide financial assistance to OBC, EBC and DNT students studying at post matriculation 10th pore jo mane bhi pata padanti seman ko pai, or post secondary stage to help complete their education. Okay, so who are eligible? Students must be permanent resident of India. To get this benefit, candidate students should belong to any of these categories. Okay, only students studying in class 9th or class 11th will be considered eligible. Okay, the family annual income should be maximum 2.5 lakh bhitar rahiba darkar. All genders of students they can apply for this, male ho female ho. And kette diya hue ethare financial assistance of 75,000 per year. PM Yashasvi re 75,000 टका वर्ष को दिया जाए to the eligible students of class 9th in the form of scholarship. Okay, and an amount of 1.25 lakh per year is provided to class 11 student. कितने ना पैसा as financial assistance. Okay, so they have to appear for an computer based entrance test जो थे paper leak न हो तो so who is the testing agency? National Testing Agency. Okay, and there are 5 sub schemes. Pre matric scholarship scheme अछि हला, post matric scholarship scheme अछि, तापरे top class education and school scheme for meritorious students belonging to this category from class 9th onward till they complete 12th. एटा हम कहले 75,000 दिया छिबो, बहुत सारा तारो सब ये अछि देखि दो. कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स, एटा भी ता अंडर रहिला कि जो कॉलेज मान करो फैसिलिटीज नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज से मान हॉस्टल बनाया को चाहू चंदी, खास करके ओबीसी किबा ए कैटेगरी स्टूडेंट्स मान पे सेम मान को भी तमे माने एटू फंडिंग तंको मिली परिबो हला, टू प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स belonging to socially and educationally backward classes, especially from rural areas, to enable them pursue secondary and higher education in the government schools, universities, institution located at a reasonable distance. Okay, এই জিনিসটা টিকে পঠি দেব ডাটা রে তোমরা এটা ଯିବ ଗୋଟେ আর্টিকেল থিলা ଦେଖିଥିବ କି ন ଦେଖିଥିବ ମୁଁ সেট মাইটি ରଖିଲି for the first time undergraduate enrollment ଆମର କମିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା, डिक्लाइन देखा जाइए. सो एग्जैक्ट देखिबो तमे जदी देखो अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट ओवरऑल एनरोलमेंट हैला, तो 2012-13 रे इट वाज अराउंड 2.5 पाखापाखी हैला, एंड एबे तमे जदी देखिबो इट इज 3.5. आ पूर्वरु जदी हमें देखिबो ता हिसाब रे डिक्लाइन हमें देखिबो, एमती ग्रोथ आउ देखिबो तुमको मिलोने. एंड खास करके मेल और फीमेल रे देखिबो, फीमेल रो देखो increasing अच्छी no doubt, male ro you can see. Okay, and this is one image. Engineering technology field रो केते जण जाउछंदी, कॉमर्स के चूज करछंदी, साइंस के चूज करछंदी, एंड से भितर मेडिकल साइंस के चूज करछंदी. तो दिस ग्राफ्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू.
तुम पूरा स्टेट वाइज डाटा भी ये अच्छी है ओडिशार नहीं तो ये जिनसा देखो अंडर ग्रेजुएट किए जॉइन होती डिप्लोमा किए जॉइन होती 10th पर ओके एवरीथिंग ये ग्राफ्स रे मेंशन अच्छे तो काइंडली पूरा पढ़िबो AISHE रिपोर्ट थ्रू रु एटा मिले व्हाट इज AI ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है ता से रिपोर्टा देछि जेहेतु इट इज इंपोर्टेंट तो PDF टा मिलले पढ़िबो नले भी तुम सर्च भी करि परिबो गोटे आसी जेहेतु डाटा गुडाक लिखि दबो ओके कौन सब अच्छी okay so this was all about today thank you Okay.